अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम लोग यहाँ क्यों हैं। तो मजीद किसी ब्रीफिंग के लेट्स स्टार्ट विद द टॉक। For the next 10 or 12 minutes, I'll be talking about something which is very important for selection boards. I'll just be talking about one question which is invariably asked at the start of any selection board. और जब मैं ये आपको एडवाइस दूंगा तो इस एडवाइस के पीछे सिर्फ एक बैकग्राउंड ये है कि आई हैव द ऑनर ऑफ अपीयरिंग बिफोर सिलेक्शन बोर्ड्स एट three or four medical universities in Pakistan, one medical university abroad. I also have the experience of appearing before the search committee for the post of vice chancellor and a one-on-one interview with the CM for the post of vice chancellor. So let's start. अगले 10 मिनट में हम जो बात करेंगे उसमें हमें दो चीजें पता चलेंगी। एक तो ये है कि जब इंटरव्यू के अंदर the interviewer asks us, please tell us about yourself. So what is the best way to answer this important question? The other thing that we learn from this talk is that how would you convince your interviewer that why you are a good fit for the position? ये जो सवाल है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ये कई डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स में आता है। दे मे आस्क यू व्हाट डू यू वांट अस टू नो अबाउट यू, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, टेल अस समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट योरसेल्फ, और वॉक अस थ्रू योर सीवी। नाउ इनवेरिएबली 99.9% all selection board interviews start with this one question: please tell us about yourself. Now, this is an open-ended question, and it's quite natural to, worry what the interviewer actually wants you to tell him. I would suggest that you take it as an opportunity because the interviewer has actually given you a chance to respond as you like. बहुत सारे जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो अपने आप से सवाल ये करते हैं और आमतौर पे पूछते भी हैं कि when the selection board has already read my CV, don't they know all about me? Why are they asking this question? इस सवाल का जवाब ये है कि by and large chances are the interviewers or the members of the selection board have actually not read your CV, and I'll explain you why. जब आप अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट के लिए तो आपका करिकुलम वाइटी जो है या रेज्यूमे जो है, दैट इज रिसीव्ड बाय द एचआर एंड दिस इज फॉरवर्डेड टू a committee which is known as a scrutiny committee. It is not necessary that the members of the scrutiny committee are also members of the selection board. So basically, recruiting is a very disjointed process in which one committee actually reads your CV and the other committee, which has not gone through your CV, will be interviewing you. So I think it is always wise that you assume that the interviewers do not know anything about you. Now, when they ask this question, they are actually interested to know about your professional journey. कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, और वो ये भी जानना चाहेंगे इस सवाल के बाद कि आप में ऐसी क्या खूबियां हैं कि आप इस जॉब के लिए बेस्ट सूटेड हैं कंपेयर टू अदर कंटेंटर्स या दूसरे जो जॉब सीकर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। नाउ, चूंकि चांसेस बहुत हाई हैं कि आपके इंटरव्यू का जो स्टार्ट होगा वो इसी सवाल से होगा, क्योंकि आपको खुली छुट्टी होती है, आज़ादी होती है, लिबर्टी होती है कि आप इस सवाल का जवाब कैसे दें। तो बेहतर ये होता है कि आप इंटरव्यू से पहले ये सवाल का जवाब क्राफ्ट करके जाएं, डिज़ाइन करके जाएं, लिख के, प्रैक्टिस करके और टाइम बाउंड करके, और उसके बाद आप इंटरव्यू में जाएं। So let's talk quickly about how to answer when you are asked, tell us about yourself. सबसे पहली बात यह है कि when you are asked, tell us about yourself, you should not be summarizing your CV because that becomes very mechanical. Actually, the interviews want you to tell a great story about yourself with the background of your professional achievements.
You should be very concise. At most 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा आपने टाइम नहीं लेना है. And you should actually write down the answer to this question and you practice. You practice with a timer and you practice in front of a friend. And I would suggest that when you craft the answer to this question, tell us about yourself, you should use a format which is known as present, past, and future format. And I'll explain how. You start the first paragraph, your answer, with actually telling them where you are in your career at this moment. This will start with your current job title and where you work. What are the responsibilities that you hold? If you have any recent projects that you have worked on, please mention them and give your key accomplishments. अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रा सा ऐड कर दूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं होना है अपनी accomplishments के बारे में या अपनी strengths के बारे में. आप सिर्फ वो accomplishments mention करें जो आप examples के साथ support कर सकते हैं. For example, let me give you an example. When I appeared for my post of associate professor, I already had the honor of inculcating biomedical ethics as a subject for undergrad students, because that was my project for my biomedical ethic diploma. So when I told them that I have improved the teachings of undergrads, I actually provided them with an example of, improving the curriculum and making our university the first public sector university to have biomedical ethics on its curriculum. So आप जो भी accomplishments बताएं, वो examples के साथ दें. अगर ऐसी कोई example नहीं है, तो I would suggest कि don't be very liberal with your accomplishments. और आपकी जो अभी की responsibilities हैं, please try to match them with the job you have applied for. For example, if you are good in teaching and you applied for the post of professor, you can always tell them that your teaching experience would be an asset for the university. If you're good in patient care, you know some special skill which may be helpful for the patients, so please mention them. Once you are done with the present statement, you start with your past statement. Past statement may you basically start with the motivation that actually helped you choose this field. What motivated to come into medicine? Any certifications that you had achieved in the past working experience, mention them. आपकी skills कौन सी हैं जो आपकी job में help कर सकती हैं, वगैरह वगैरह. There's a small example here जिसमें आप past की statement लिख सकते हैं. I'll read it for you. It says, I've always been fascinated with helping others and hence decided to pursue my career in medicine. Now, this tells you your motivation for coming into the field of medicine. While in uni, one of my favorite subjects was OBG. So I pursued a postgraduate degree in this field. My first job was as a senior registrar in OBG at ABC Teaching Hospital. Here I managed complicated cases, both elective and emergency. The skills learned will help me perform well in the job I'm applying for. And I'm sure कि जब आप ये बात कहेंगे तो आपके जो interviewers होंगे वो इस बात से agree करेंगे कि once they take you as an assistant professor in OBG, you will help in managing the patient care in a proper way. Past statement के बाद future statement. Now this is a very strategic answer. इसमें basically आपने show ये करना है, this is a third paragraph, और इसमें आपने show ये करना है कि you have actually researched the organization or the university you are applying for. You have gone through their mission statements and goals, and then you tell them how your career goals actually sync with their mission. Shown below is the mission of one of the most dedicated medical universities in the country, Dow University of Health Sciences. इनकी mission statement ये है कि it says that to provide outstanding patient-centered education, training, clinical care, informed by cutting-edge research and innovation. So you can finish answering the question, tell us about yourselves, by giving a future statement which would say, I also want to be part of a university that contributes to the community by providing quality healthcare, a cutting-edge research, and a world-class medical education. क्या चीजें नहीं बतानी है आपने? Some things are totally taboo when you answer this question. Please don't state your name. My name is ABC. It looks very stiff and mechanical. Everybody knows your name.
Please don't read your CV. You have to tell a very interesting and exciting story about yourself, consisting of 3 paragraphs: your present status, the past experiences, and your future aims. Who you are, what brought you to this field, and where do you want to go from here? And be concise, 2 या 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं. Please don't share personal information. You don't have to tell them about your marital status. You don't have to tell them about your religious or political affiliations. You don't have to tell them how many children you have, because this information is totally irrelevant to the job you have applied for. And your interviewer has no relationship with this information and how this information would affect your capabilities at the new job. And please mind your body language. Don't keep a masked face. थोड़ा सा मुस्कुरा भी लें. Maintain an eye contact. And I would suggest that you not only maintain an eye contact with the person you are answering to, but you maintain an eye contact with other members as well. कभी कभी वो आपसे पूछते हैं कि जी why should we choose you for this post and not the other people who are sitting outside. उसके लिए बेस्ट आंसर है कि आप में कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपको उनसे थोड़ा सा मुनफरिद करती होगी. Maybe it's these are your years of experience in the medical field, or you have some specialization in surgery, or in your specialty, or in medical education, which determines your superiority over other candidates. Or maybe you have some very sought after skill that may help the institution you're applying for. In summary, please do not read your CV. Write down an exciting story about your professional journey, which consists of the present, past, and future format. Please do not start or state your name. No personal information should be granted. Be very, very concise, not more than 3 minutes. You can do this by answering this, by practicing this answer in front of a friend using a timer. Please smile and maintain an eye contact. Now, before I finish, there are a few bonus questions जो कि मैं यहाँ पे आपकी सोच के लिए छोड़े जा रहा हूँ कि अगर ये सवाल आपके ऊपर ड्रॉप किए जाएं तो how would you answer them? Just 3 slides and then I'm done. पहला सवाल, ये बहुत commonly पूछा जाता है, what are the key challenges faced by the students today? Now, sky is the limit. इसके जवाब का फायदा ये होता है कि इंटरव्यूअर्स को ये पता चलता है कि you are fully aware of the current state of medical education in the country. Once you have identified the challenges which are faced by the students, the next question might be, how would you address this issue? A third question is, जो कभी कभी पूछते हैं, of all the universities in the country, why did you choose these universities? अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी की तारीफ कर दी कि जी इसके बगैर तो दुनिया ख़त्म है, and I'm dying to join this university, a very wise and a smart interviewer may put up another question, जो कि मैं आपको अभी शो करता हूँ, and be ready to answer the next question. अगर आप इतने ही excited हैं हमारी यूनिवर्सिटी को, तो would you still work with us if there was no financial incentive? Meaning, अगर हम आपको salary package ना दें, तो क्या आप हमारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे या नहीं ज्वाइन करेंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि इसका आपने क्या जवाब देना है. I'll finish my talk with this. Muneeb, over to you. Thank you so much, sir. आपने बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत expertly हमसे share किया regarding what we should be doing in our interviews. And now I'll be asking Professor Dr. Saba Sohail to take over, and then she will be telling you what not to do. ऐसा क्या है जो आपने नहीं करना? What are the biggest red flags that may turn your interview into a disaster? So, Dr. Saba, you're welcome to share your presentation. Thank you very much. I'm trying to share my screen right now, and there it is. All right. Is it visible to everyone, and am I audible? Yes, ma'am. आपकी आवाज भी आ रही है, and we can see your screen. बस आप full screen कर ले मैम इसको, so we'll be able to see it in a larger. Yes. All right. So this is Dr. Saba Sohail. I'm again, who am I to be here and talking about critical deal breakers? I'm basically a radiologist now serving as the principal Dow Medical College, and happen to be
interviewing and selecting a number of people in both faculty positions and non-faculty positions, both at Dow, at CPSP, and for Federal Public Service Commissions and other places. So, what makes you get rejected? ये तो आपको डॉक्टर फैसल ने भी बताया कि आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करें. जो एक क्रिटिकल सवाल होता है, एक्चुअली मैंने भी उस पर एक स्लाइड बनाई थी, लेकिन मैंने एक ही स्लाइड बनाई है उस. तो डॉक्टर फैसल ने आपको बहुत सही बताया. अब विदाउट फर्दर मैं हम लोग कुछ नेक्स्ट बात करते हैं. पहली बात तो ये कि मैं कोई अपनी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं बता रही हूँ, ना ही इसमें हमारा कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है. The objective is how to go through a faculty selection interview. पहली चीज, again, becoming a meritorious professor means that I've been through a lot of interviews and I've taken a lot of interviews as well. So how to go through it, ये हमारा it's experience speaking. But the सबसे important चीज when you come in for interview, जो आपके interviews of first impression डालती है ना, वो these are these things. No lates, please. Second, जब आप enter हो रहे हो ना, there should be no tobacco smell around you. Please. आपको बहुत honestly बता रही हूँ, ये जो एक बाहर nervous खड़े हुए आप लोग एक सिगरेट पी रहे होते हैं ना, और अंदर आते हैं and there comes a whiff of tobacco with you, that is a very, very bad impression first. Second, you should be looking very neat and very professional as you are walking in. You shouldn't be wearing something very, flashy. ये नहीं हो कि कोई आप बैठे हैं और कोई आपसे पूछ ले कि ये जो आप टाई पहने हुए कि रात को चमकती भी है अंधेरे में. People can be that brutal when they are enjoying you. तो प्लीज थोड़ी सी अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखें. लेडीज जो है ना, वो प्लीज शादी के कपड़े पहन के मत आ जाया करें. देयर इज अ बिग डिफरेंस. जस्ट बी नीट एंड बी प्रोफेशनल लुकिंग. आप कैसे लग रहे हैं नीट, जैसा आप अपने वर्क प्लेस पर होंगे, तो हाउ वुड यू लुक टू योर स्टूडेंट्स. एंड प्लीज बिलीव मी, इवन स्टूडेंट्स, आप फैकल्टी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, मैं डीएमसी के 350 स्टूडेंट्स के बैच को एक साथ देखती हूँ. And sometimes they come up and tell me their impressions of their teachers. They are brutal. Students can be so brutal कि वो आपको वही हम वही से अंदाजा कर लेते हैं कि इसको स्टूडेंट क्या इस इंटरव्यू को, इस फैकल्टी को स्टूडेंट आगे से कैसे डील करते होंगे. ठीक है. अगेन, जैसे डॉक्टर फैसल ने कहा, कीप स्माइलिंग, स्माइल, डू नॉट ग्रिन. आप मतलब समझते हैं ना दोनों का. डोंट लुक लाइक एज इफ यू आर वेरी, जैसा बहुत ही बेवकूफी वाला स्माइल ना दें. ये कहने का मतलब है मेरा. आपकी स्माइल हो, कॉन्फिडेंट हो, यस यू आर रिलैक्स्ड, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर रिलैक्स्ड. लेकिन ये कि अजीब तरीके से नहीं कि लॉपसाइडेड ग्रेन या वो वाला नहीं. और आप प्लीज अपने जो डॉक्यूमेंट्स लाएं उनको संभालते हुए मत एंटर हो, ना ही टेबल पर बैठ के ना उसको फ्लिप करना शुरू करते. ठीक है. ये बिल्कुल बिग नोज, ये वो चीजें जिसके साथ आपको ना स्टार्ट करना ही नहीं है. और मैंने लोगों को करते देखा है, स्पेशली जो थोड़े जूनियर्स होते हैं उनको, जो एसआर या एपीस के इंटरव्यू के लिए आ रहे होते हैं, मैंने अक्सर उन लोगों को करते देखा है. मैंने ये जब एडिटर्स के इंटरव्यू ले रही होती हूँ, तो मैंने उससे भी लोगों को करते देखा है. तो प्लीज डोंट डू दिस. अच्छा. सेकेंड, आप कैसे स्टार्ट करते हैं? जस्ट वॉच योर टोन. वॉच योर टोन, हाउ यू स्पीकिंग. शुड बी कॉन्फिडेंट बट नॉट स्टबर्न. नहीं, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, मैं तो इसी तरह कहता हूँ. आपसे कोई कह रहा है थोड़ा लाउड बोल लें तो ओके सर या ओके मैम, लेकिन ये नहीं कह कि मैं तो पहले ही इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ, या सॉरी मुझसे इतनी ज्यादा, इससे और तो ऊंचा नहीं बोला जा सकता. डोंट बी से दैट. डोंट से दैट. ठीक है. झूठ बिल्कुल नहीं बोले प्लीज. आपके सामने जो लोग बैठे हैं ना, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि डॉक्टर फैसल ने तो कहा कि अभी के अक्सर सीवी नहीं पड़ी होती, वाकई नहीं पड़ी होती. लेकिन ये कि जैसे स्मार्ट इंटरव्यूअर्स होते हैं ना,
तो वो जस्ट सिफ्ट थ्रू, जल्दी 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 आपकी प्रेजेंट जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपका पास्ट क्या है, जब मीनवाइल यू आर एंटरिंग यू सेटलिंग पुटिंग अप, वो जल्दी जल्दी आपका ना एक रिज्यूमे एक नजर डाल लेते हैं। तो एक तो कोई बहुत ही गलत सलत बात नहीं कहे। समटाइम्स योर रेपुटेशन precedes you। मुझे पास बच्चे आते हैं एपी का इंटरव्यू देने, या मेरे पास इवन ज्वाइनिंग देने एज एपी। मैं नाम पढ़ती हूँ, शक्ल देखती हूँ, मुझे एक अचानक याद आ जाता है कि इसको 5 साल पहले मैंने एसपीजीएस में इंडक्ट किया था फॉर ट्रेनी, और ये इसका फीडबैक। ठीक है, सो नो लाइज, पीपल डोंट, मतलब हमारे अंदर कोई लाई डिटेक्टर नहीं होता। बट इफ समवन इज experienced enough and you people happen to have a reputation, it will reach। ठीक है, सो यू नीड नॉट बी दैट ऑनेस्ट। ठीक है, अपने बारे में बताएं, इतना मत बता दे जो बताना नहीं भी है वो भी बता दे। ठीक है, आप थोड़ा सा आई कांटेक्ट मेंटेन रखें, जिससे भी बात कर रहे हो, जिसको भी जवाब दे रहे हो, लेकिन उसको ना पूरी बुरे नहीं, यू नो, जस्ट कीप स्माइलिंग, रिलैक्स, keep looking at others as well, maintain it eye contact with one or the other person। बिल्कुल नीची नजर करके नहीं बैठे, लेकिन एक ही शख्स को कंटिन्यूअस विदाउट ब्लिंकिंग मत घूरते रहे। और जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, उसका जवाब जरूर दे, उसका जवाब दे, उसके सवाल में दूसरा जवाब नहीं पूछे कि आप ये क्यों पूछना चाह रहे हैं, या इसका क्या ताल्लुक है इस बात से, या मतलब व्हाट इज दैट टू डू विद माय इंटरव्यू। ये सब ये मत कहे प्लीज, ये एक बड़ा खराब इंप्रेशन देने वाली चीज होती है। ओ माय गॉड, ये वो सवाल है, $1 million क्वेश्चन। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उन्होंने कहा ना 2 to 3 minutes, आई एम दिस। अच्छा, मुझे इस वक्त कोई पूछे कि मैं इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आपने सुना था ना मैंने आपको अभी क्या इंट्रोडक्शन दिया था, इट वॉज जस्ट लेस देन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, कपल ऑफ मिनट से मैंने आपको बता दिया था मैं ये हूँ, और मैं यहाँ इसलिए हूँ। इस वक्त जो मैं आपको इतना बड़ा लेक्चर दे रही हूँ और इस किस्म के रिमार्क्स पास कर रही हूँ, सो व्हाट इज माय लेजिटिमेसी टू से दीज थिंग्स। तो आपकी की अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या है, आपकी की स्ट्रेंथ्स क्या है, विद प्रूफ, जैसा कि अब भी डॉक्टर फैसल ने आपको बताया, और उनके आपके काम से इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अब आप ये बताने लगे कि नहीं जी मैंने तो फलाना अवार्ड उसमें फलाने उसमें जीता हुआ है, ओके फाइन, बट हाउ वुड दे दैट हेल्प यू थ्रू टीचिंग एट और doing this particular job as a faculty member of this particular university। ठीक है, तो आप ये जरूर बताएं। और क्यों बताएं, बिकॉज द प्रोडक्ट इज यू, यू आर ट्राइंग टू सेल योर सेल्फ। ठीक है, कि वो आपको ले लें, जहां आप इंटरव्यू दे रहे हैं अगर आप उसमें रियली इंटरेस्टेड है तो वो आपको ले लें। व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग स्किल, आप अच्छा बोल सकते हैं, आर यू अ गुड स्पीकर, आर यू अ गुड सर्जन, are you a good clinician, are you a good communicationist, are you a good planner। आप आपकी स्ट्रेंथ क्या है। लाइक मेरी स्ट्रेंथ अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन। पता नहीं आप लोग इसे कितना एग्री करेंगे, बट माय स्ट्रेंथ इज कम्युनिकेशन, ईदर वे। ठीक है, और सेकंड, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ नॉलेज, रिसर्च एक्सपीरियंस, बैक्ड बाय प्रूफ, एविडेंस। ठीक है, फिर आपकी अपनी पर्सनालिटी स्ट्रेंथ्स क्या है, आर यू टीम मेंबर। ठीक है, प्लीज कभी भी ये ना कहे कि नहीं मुझे, मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ। इवन अगर आप करते भी हैं, ट्राई टू ओवरकम दैट, बी a टीम मेंबर। You can adjust, you are flexible, you are ready to adjust, you are ready to meet deadlines, whatever your personality strengths are, things that you do the best। और अगेन, आपकी की accomplishments क्या है, आपने अब तक क्या क्या किया हुआ है, क्या एक्स्ट्रा है। 4 SR बैठे हैं, 4 लोगों ने अप्लाई किया है मेरे पास रेडियोलॉजी के SR के लिए, तो मैं इन 4 में से
आपके अंदर क्या खास बात है कि मैं आपको सिलेक्ट करूं? ठीक है। क्या आप पब्लिक सेक्टर काम में काम करने में इंटरेस्टेड है? क्या आपको सैलरी में इंटरेस्टेड है? क्या आप सर्विस में इंटरेस्टेड है? क्या आपको फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए? क्या चाहिए आप? बी ऑनेस्ट। और आप अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स बताएं कि मेरा ये है, मैंने ये किया हुआ है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो दैट्स वाई, ये करना चाहती हूँ, तो दैट इज वाई आई एम मोर सुटेबल फॉर दिस जॉब। ठीक है। अच्छा, अब आपने जब ये सारी बातें कर ली, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? अवॉइड डिप्रिकेटिंग। क्या आपको करना है? आपने ये जब आप, चल इंटरव्यू हो गया, आपने बता दिया ये है। अच्छा, एक बात याद रखिए, हर इंटरव्यू में ना एक प्रोपोर्शन होता है कि उस इंटरव्यू का एडमिनिस्ट्रेटर, उस इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होगा, एचआर डायरेक्टर बैठा होगा, जो आपसे सैलरी वैलरी के बारे में पूछेगा कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है। कुछ सब एक दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे जो आपसे, देखिए आप फैकल्टी पोजीशन के लिए आ रहे हैं ना, तो आपने कोई ना कोई फेलोशिप, कोई ना कोई मास्टर्स डिग्री ली हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है, तो वो आपसे बहुत डिटेल में, कोई आपका नहीं कि एफसीपीएस का वाइवा नहीं हो रहा, ये कोई एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं है कि आपसे कोई नॉलेज पूछेगा कि जी ये इस करते हैं तो इसकी क्या डेफिनेशन है और इसकी क्या क्लासिफिकेशन होती है और क्या होता है और इसकी स्टेजिंग कैसे होती है फलानी चीज कंडीशन की। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे जस्ट आपकी जनरल अप्रोच पूछने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपसे अक्सर और बेशतर जो लोग असल में पूछते हैं वो ये कि आप अभी कहाँ काम करते हैं, या आप पहले कहाँ काम कर रहे थे, और आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं डॉक्टर फैसल ने, जो आपको बोनस क्वेश्चंस दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसका, या आप अपनी मौजूदा पोजीशन से स्विच करके यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों आना चाहते हैं। आपने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर लिया, आपने बता दिया। अब आपसे लोग पूछना चाहते हैं कि आप अपने मौजूदा एम्प्लॉयर को छोड़कर, या आपने अपने पुराने एम्प्लॉय बॉस को क्यों छोड़ा, पुरानी कंपनी को, पुराने इंस्टीट्यूट को क्यों छोड़ा, और यहाँ क्यों आना चाहते हैं। तो उनको आप एक ऑनेस्ट जवाब दें, विदाउट विदाउट डिप्रिकेटिंग, विदाउट इंसल्टिंग और saying something bad about your present or past employer। ये सबसे बुरी बात होती है। और ये पहला लोगों के ख्याल ये आता है कि हमारे बारे में भी ऐसे ही कहेंगे। अब ये नहीं बताएं कि वो मुझे काम नहीं करने देते या वो मेरे कामों में यूं मुझे तंग करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक इंस्टीट्यूट के लिए एक कंसल्टेंट पोजीशन के लिए इंटरव्यू ले रही थी, और मेरे साथ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट बैठे थे, और उन्होंने मेरे सामने इंटरव्यू से पूछा, एप्लीकेंट से पूछा कि आपको यहाँ इतनी सैलरी मिलती है और आपका अच्छे पैकेज है, आप वहां से यहाँ क्यों आना चाहते हैं। और उन्होंने ये जवाब दिया कि मुझे वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर जो है बड़ा इंसल्टिंग है, और वो मुझे मेरी मर्जी से काम नहीं करने देते। दिस इज द वर्स्ट आंसर यू कैन गिव, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकले तो मुझे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ने मेरे अपने उस वक्त के बॉस को कोट किया और कहा कि आप भी तो ऐसी एटमॉस्फेयर में काम करती हैं, आपने तो कभी आकर हमसे ये नहीं कहा है। कैन यू इमेजिन व्हाट impression it carries, that you work in a you cannot adjust to a certain environment। तो प्लीज अब आप जवाब दें कि हाँ, मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मुझे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स हैं, और मैं यहाँ समझता हूँ कि यहाँ मेरी फला ये एक्सपर्टीज ज्यादा बेहतर तरीके से यूज हो जाएगी। लेकिन आप अपने मौजूदा या पास्ट एम्प्लॉयर को प्लीज डिग्रेड नहीं करें। आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके जो मौजूदा बॉस है उसका कहीं आपके इंटरव्यू से कोई, इंटरव्यूअर से कोई इनसाइड लिंक ना हो। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। अच्छा, दूसरा ना, आप अपनी लिमिटेशंस या साइटेशंस नहीं बताइए। मैं ये इसलिए आ रही हूँ कि मैं इवनिंग नहीं कर सकती, या मुझे नाइट नहीं करनी। अभी आप अभी से नहीं कहें, आपको अभी कोई वर्किंग आवर्स नहीं दे रहा, पर until unless they specifically ask you, आप उनसे ये नहीं कहें।
इस किस्म की ना लिमिटेशंस या कंडीशंस पहले से नहीं लगा दें कि मैं इस टाइम पे काम नहीं करूंगी, मैं यूं नहीं करूंगा, मैं इस तरह नहीं जाऊंगा, मुझे अगर एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा तो मैं इस तरह नहीं करूंगा। इस किस्म की बात पहले से नहीं कही। दिस इज समथिंग दैट स्टॉप्स योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। और ये मैंने लोगों को करते देखा है, मैंने एक्चुअली सुना है, और मेरी समझ में नहीं आता कि इनको कभी किसी ने क्या बताया नहीं है, किस किस्म की बातें नहीं कहते हैं इंटरव्यू में बैठ के। अच्छा, बाज़ औक़ात ना आपको एक स्ट्रेस इंटरव्यू दिया जाता है कि आपको आपको ना कोई बहुत धीमे से बट ऐसा मैं सम पीपल आर वेरी डार्क सॉर्ट ऑफ अ सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वो आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लेंगे, स्ट्रेस दे देंगे आपको कि अच्छा ऐसा है तो आप क्या करेंगे। तो आप उसमें रिएक्ट ना करें, स्माइल। देखिए सर, जब नहीं, अगर आपको कोई पॉजिटिव, टेक समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट। लाइक मेरे एक अंकल जो है वो आईएसएसबी के लिए इंटरव्यू दिया करते थे, के लिए इंटरव्यूज लिया करते थे, सिलेक्शन इंटरव्यूज। वो बता देते हमेशा कि कितनी ही खराब सिनेरियो प्रेजेंट किया जाए, अगर जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो उसको पॉजिटिव सिचुएशन में चेंज कर देगा, तो बहुत उसका अच्छा इम्पैक्ट होता है। लाइक ट्राई टू गिव एन आंसर। अगर आपको कोई स्ट्रेस दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है कि जी अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए, आपसे आपके ये एम्प्लॉयर आपसे नाराज हो जाए या आप ये डेडलाइन पे नहीं फिनिश कर पाए, तो आप क्या करेंगे या आप किस तरह करेंगे। अगर आपको ये काम दिया जाए और आप ये नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल नई जगह दे दी जाए, आपका बॉस आपको ये दे दे, तो आप क्या करेंगे। या आप, ये जैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स में होता है कि आपके पास अगर ये इक्विपमेंट नहीं है तो क्या होगा, या आपको पीएमडीसी अचानक विजिट करने का कहे तो आप क्या करेंगे। तो प्लीज ट्राई टू थिंक ऑफ, पहले से जहन में रखिए कि आपको कितनी ही निगेटिव सिचुएशन क्यों ना प्रेजेंट की जाए, आप उसका एक स्माइल के साथ कोई पॉजिटिव जवाब दीजिए। ठीक है। या फिर अगर आपको आउटराइट कह दिया जाए कि नहीं, आपकी तो जो एक्सपीरियंस है या आपकी जो चीज है, ये तो जो हमने पूछा था उसके साथ करती ही नहीं, या हमने तो इस कैंपस के लिए ये इंटरव्यू ले रहे हैं और आप तो इस कैंपस पे हैं, तो आप किस तरह छोड़ के आएंगे। तो इसका ना कोई बहुत नेगेटिव जवाब मत दीजिए, नाराज भी नहीं हुई, नाराजगी भी नहीं शो कीजिए। ये भी नहीं कहिए कि जब आपको बताता नहीं था तो फिर मुझे बुलाया क्यों था। ये बहुत ही गलत जवाब होता है। ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल समझा रही हूँ। जब मैं अपने फर्स्ट टाइम अपना एसोसिएट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गई, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे एक एसआर के एक्सपीरियंस को, कोई रूल चेंज हो गया था रिसेंटली, और मेरा वो फलाने एसआर के एक्सपीरियंस इतना नहीं काउंट होगा। और मुझे ये भी नहीं पता था उस वक्त कि जो मेरा कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस है वो काउंट हो सकता था। तो मुझसे उन्होंने कहा कि आपका तो एक्सपीरियंस ही पूरा नहीं है। अब उसका ऑनेस्ट जवाब जो आमतौर पर मुंहफट लोग दिए देते थे कि फिर आपने बुलाया क्यों था, पहले ही मुझे शॉर्टलिस्ट कर देते। उसके बजाय मुझे हंसी आई। मैंने कहा सर, मैंने ट्राई की थी कि शायद कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, बट एनीवे आई एम यंग एंड आई हैव स्टार्टेड माय करियर। कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आएगी तो आई अप्लाई अगेन व्हेन माय एक्सपीरियंस वुड बी दैट वुड बी इनफ, यू नो। आप उसका जवाब दे स्माइल के साथ दें। एंड द पर्सन वाज टेकिंग इंटरव्यू, टू ऑफ देम व्हेन दे केम आउट and I was about to leave, and they smiled at me and said कि सबा, that was a very good question, that was a very good answer, मैंने बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ के आई हूँ। ठीक है। तो मतलब इससे मेरा मुराद ये नहीं है कि मैं आपको अपनी तारीफ बता रही हूँ। मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि इवन अगर आपको कोई आउटराइट रिजेक्ट भी कर रहा है ना कि आपके नई सिलेक्शन होगा, even then end on a positive note. Okay, so that helps. So good luck with your interview. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was, for the very wise words. I'm now going to request Professor Dr. Shamsa Humayoon to please share her views and take the discussion forward.
हाँ जी, कैन यू हेयर मी? Yes, ma'am, we can all hear you. अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर शमसा हुमायूं। आई एम एकेडमिक एडवाइजर, जैसे उन्होंने पहले मेरी इंट्रोडक्शन कराई, टू कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान, एंड आई एम वाइस चांसलर एंड प्रो वाइस चांसलर फॉर्मर फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी। अभी जो डॉक्टर फैसल गनी, डॉक्टर सबा सुहेल ने बहुत अच्छी टिप्स दी फ्रॉम माई साइड, बिकॉज मैं बहुत सारे इंटरव्यूज लेती हूँ पब्लिक सर्विस में भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। सबसे पहली बात, बी पॉजिटिव। आपने कभी भी इंटरव्यू में ये सोच के नहीं जाना कि मैंने आज सिलेक्ट नहीं होना। ऑलवेज गो विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, विद कॉन्फिडेंस। और इंटरव्यू में कभी भी कैजुअल नहीं होना। मैंने ये देखा, लोग कहते हैं हमने कौन सा सिलेक्ट हो जाना, चलो जाके इंटरव्यू दे तो लेते हैं। नो, दिस इज वेरी वेरी कैजुअल अप्रोच टू एन इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में ऐसे जाएं कि आपने उसको, इंटरव्यू इज जस्ट अ 10 और 15 मिनट्स एनकाउंटर, लेकिन उसके पीछे आपके कम से कम 1.5 महीना 2 महीने की प्रिपरेशन होनी चाहिए। यू शुड योर सेल्फ क्वेश्चन, अपनी एक कॉपी के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर 50 क्वेश्चंस बनाएं, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस विच यू कैन बी आस्क्ड। या आप अगर इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हों तो आप लोगों से क्या पूछेंगे, और उनके सजेस्टेड जवाब तैयार करें। आई इंश्योर यू कि उन्हीं 50-60 क्वेश्चन में से घुमा फिरा के कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। जैसे डॉक्टर फैसल गनी ने कहा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। इट मे बी लास्ट बट नॉट लास्टिंग। यू कैन चेंज विद प्रोग्रेस ऑफ इंटरव्यू। जैसे सारी बात हो गई, ड्रेसिंग कैसे आप करें, आप यू शुड अपीयर नीट क्लीन। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने ये देखा, लोग आते हैं इंटरव्यूज देने, दे डोंट नो द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट। आपको वेरी प्रिसाइजली पता होना चाहिए, इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एन एसआर टू द पब्लिक सर्विस कमीशन, एपी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या एचओ की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। इसको पढ़ के जाएं। अगर इंस्टीट्यूशन किसी में जा रहे हैं वहां से निकाल लें, अगर गवर्नमेंट के जा रहे हैं तो देखें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आपसे क्या मांगा जा रहा है। डोंट बी वेग कि हाँ मैं ये भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी। नो, देयर इज रिटन जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी पोस्ट। जब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन का पता लग जाता है और आपसे पूछा जाता है, डू यू नो व्हाट इज योर जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड देन यू आर वेग, इट गिव्स वेरी वेरी बैड इंप्रेशन। और जब आप एंटर होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, ऑलवेज ग्रीट द पैनल, सलाम करें और परमिशन लें, कैन आई हैव अ सीट। इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन कि जी आप कर्टियस हैं, आप कॉर्डियल हैं, यू रिस्पेक्ट द इंटरव्यू पैनल। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ओवर द इयर्स देखी है, अगर आपका नाम कोई बहुत ही इस तरह का है जिसकी कोई रेलेवेंस है, सो प्लीज़ रिसर्च ऑन दैट कि हाँ मेरे नाम का ये मतलब है और दिस इज दैट। फिर अगर आप किसी बहुत ही मशहूर एरिया से बिलोंग कर रहे हैं या आपके एरिया में कोई यूनिवर्सिटी है जो किसी सेंट के नाम पे है, आपको पता होना चाहिए। यू शुड नॉट बी लाइक दिस कि हमें तो दुनिया जहान का कुछ पता ही नहीं, बस हम तो यही पढ़ के आ गए मेडिसिन। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है आके, जब आप किसी भी पब्लिक सर्विस में जाते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स ऑफ योर कंट्री आपको पता होने चाहिए। मोटी मोटी चीज़ें आप पढ़ के जाएं, आपको थोड़े थोड़े स्टैट्स आने चाहिए। फिर बात हो जाती है लैंग्वेज की, कि उर्दू बोलें, लोकल लैंग्वेज यूज़ करें, इंग्लिश बोलें। प्लीज़ आपने जो भी बोलना है, एक लैंग्वेज पकड़ें, उसको अच्छे तरीके से बोलें। ये मत करें कि आधा वो बना बना रहे हैं, आधा वो बना रहे हैं, कुछ किसी को समझ नहीं आ रही। देन अकॉर्डिंग टू योर जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए जा रहे हैं लाइक सीनियर रजिस्ट्रार, तो आपको पता होने चाहिए आपकी लिमिटेशंस क्या हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, आपको उसकी डिसइंफेक्शन पॉलिसी, आपको वेस्ट मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे डॉक्टर सबा ने बड़ी बड़ी अच्छी बात की, कोई आपका वहाँ एग्जिट एग्जाम नहीं हो रहा,
आपसे FCPS या आप सब्जेक्ट रेलेवेंट चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं। अगर पूछी भी जाती हैं तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके व्यूज़ जाने जाते हैं किसी कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर कि अच्छा जी ये है, आप बताएं, इफ़ यू वुड हैव बीन देयर आप क्या करेंगे। फिर गायनी ऑप्स में जैसे आई एम एन हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, तो आपके सस्टेनेबल SDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो आपकी करंट लेटेस्ट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। देन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिसर्च। आप किस फैकल्टी पोजीशन के लिए जा रहे हैं, या आप पब्लिक सर्विस में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, एसोसिएट की है, प्रोफेसर की है, आपने कोई रिसर्च की हुई, एंड इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इन रिसर्च, एंड यू शुड बी, तो अपनी जो आपने एक बहुत कोई अच्छी आपकी रिसर्च है, ऑलवेज मेंशन दैट। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि आप अपना इंटरव्यू खुद लेके चलते हैं। आप इंटरव्यूअर कुछ भी पढ़ के नहीं आए होते, इंटरव्यूअर ओपन माइंड के साथ आए होते हैं, आपने उनको गाइड करना होता है। जहां आप छोड़ते हैं, आपका इंटरव्यूअर वहीं से सवाल शुरू करता है, बिकॉज दैट इज द फिलर, द क्यू यू गिव। अगर आप अच्छा क्यू देंगे, दिस मीन्स दैट यू आर लीडिंग योर इंटरव्यू, और अच्छा जो इंटरव्यू देने वाला है, कैंडिडेट है, वो अपना इंटरव्यू खुद लेके चलता है। लाइक एक मिनट की एग्जांपल दे दूं, जैसे मुझे मेटरनल मोर्टेलिटी वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो थोड़ी सी रिसर्च करके ना आपके बोर्ड में कौन है। तो हमारी एक मरहुमा प्रोफेसर हुआ करती थी, शी हैज वर्कड लॉट ऑन द मेटरनल मोर्टेलिटी इन फैसलाबाद। तो मुझे पता था कि वो ज़रूर पूछेंगी, तो मैंने अपने इंटरव्यू में जब उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने अपना आखिरी जो सेंटेंस था उसमें मैंने डाला मेटरनल मोर्टेलिटी। तो इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हाँ जी, मेटरनल मोर्टेलिटी की क्या क्या वजूहात है, आप मुझे बताएं, अगर आप हों तो कैसे करेंगे, बिकॉज आई हैव द एक्सपर्टीज इन दैट। सो दिस इज हाउ आप अपने जो एरियाज, ऑब्वियसली किसी के 100% तो स्ट्रॉन्ग एरियाज नहीं होते, सो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, इंटरव्यू वहीं लेके चलना है। एंड शी वॉज सो हैप्पी कि वो तुम्हें इतना अच्छा आता है, तुम ये कुछ करती हो, तुम्हें पॉलिसीज भी पता है, तुम ये भी कर लोगी, वो भी कर लोगी। सो आई टॉप दैट इंटरव्यू होल पंजाब एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी। तो आपने इंटरव्यू जब अपना लेके चलना है, सिमिलरली अगर आपका रिसर्च स्ट्रॉन्ग एरिया है या फैकल्टी पोजीशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए करिकुलम क्या है, आपको पता होना चाहिए मॉडर्न मॉडर्न टीचिंग मेथडोलॉजीज क्या हैं, आपको पता होना चाहिए स्मॉल ग्रुप में आपने कैसे पढ़ाना है। अगर आप SR के लिए जा रहे हैं तो आपको SR का पता होना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं लाइक एक डिस्ट्रिक्ट गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली पीपल वांट टू नो योर एक्सपर्टीज, कि आपको सर्जिकल स्किल्स कितनी है आपकी। सो सिमिलरली एवरी पोस्ट हैव डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप एक जैसे डॉक्टर फैसल ने कहा, आप वाइस चांसलर की पोस्ट पे जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपसे पॉलिसी मैटर्स पूछे जाएंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, आपकी विजन क्या है, आपके आई डू यू नो द प्रॉब्लम्स विच एग्जिस्ट इन दैट यूनिवर्सिटी, आप इसकी कैसे करेंगे डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स। सो आपके हर लेवल का इंटरव्यू इज डिफरेंट। ये मत समझिएगा अच्छा मैंने पहले इंटरव्यू दे दिया और ये भी वैसा ही होगा, मैं पहले तो सिलेक्ट नहीं हुआ, मैंने कौन सा सिलेक्ट हो जाना। नो, अगर आप पहले सिलेक्ट नहीं हुए, और ये भी पूछा जाता है पब्लिक सर्विस में, हाउ मेनी टाइम्स यू अपीयर्ड इन द पास्ट, सो रादर देन ब्लेमिंग द सिस्टम, आप कहें हाँ मैंने इंटरव्यू जरूर दिए थे लेकिन मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, एंड नाउ आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और बजाय इसके कि इसको एकदम से एंग्री हो जाना और सिस्टम को कहने लग जाना सिफारिशें बड़ी चलती हैं जी, फलाना बड़ा चलता है, दिस मीन्स यू आर ब्लेमिंग द पैनल, कि पैनल तो सिफारिशें मांगता है, पैनल ने हमें कहाँ सिलेक्ट करना है। सो फ्रॉम माय साइड, एक तो हमेशा पॉजिटिव हूँ, नंबर टू मैं बड़ा इस पे बिलीव करती हूँ जो उन्होंने अभी बात कही कि आप हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, वो शुरू हो जाते हैं मैंने मैट्रिक तब किया जी, मैंने तो FSC तब की। नो वन इज इंटरेस्टेड इन योर मैट्रिक एंड FSC।
सो आप अगर आपने तैयारी नहीं की हुई तो आप कभी भी इंटरव्यू अच्छा नहीं दे सकते। तैयारी बहुत सीरियसली करें, फिर अल्लाह पे रिजल्ट छोड़ दें, और इंशाल्लाह अगर आप अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, तो आप सिलेक्ट हो ही जाते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, ma'am, for your wise words. I'm sure everybody learned a lot from you. I will now be asking Professor Dr. Haroon Hamid to take over. Professor Dr. Haroon Hamid is the chairman of pediatrics at King Edward Medical University, and he's the CEO of Mayo Hospital, Lahore. He is a prominent clinician and an academician, and I'll be requesting him to share his views and his tips, now. So you may take over. जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. Am I audible, Dr. Munib? Yes, sir, we can hear you. जी, thank you very much. I think it has been a wonderful webinar. I listened to what Dr. Faisal, Dr. Saba, and Professor Shamsa have highlighted. Honestly speaking, these were the pearls of wisdom that they have shared of so many years of their experience of interviewing and appearing in the interviews and taking the interviews both. So I would just want to reiterate just a few very, very important things. I think that have been already highlighted, but I think the most important thing is that you go for the interviews well prepared. और ये बात सभी ने कही, फैसल साहब ने भी कही, डॉक्टर सबा ने भी कही, डॉक्टर शमसा ने भी कही. अब वेल प्रिपेयर्ड का मतलब क्या है कि क्या तैयारी करके जाएं, कोई सूट वूट पहन के जाएं, अच्छे कपड़े पहन के जाएं, खुशबू लगा के जाएं. और इसको उन्होंने हाईलाइट भी कर दिया है. मैं जरा सा टाइम ज्यादा ले लूंगा मनीप साहब, अगर आप बुरा ना मानिएगा. वेल प्रिपेयर्ड का मतलब ये है कि आपको मालूम हो कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उसके तकाजे क्या हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उस पोस्ट की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उस पोस्ट पे वीकनेसेस क्या हो सकती हैं, उस पोस्ट पे काम करके आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, और उस पोस्ट पे काम करते हुए क्या थ्रेट्स हो सकते हैं to the working environment, to yourself, to your well-being, everything. आप उसकी तैयारी करके जाइए. आप सोचिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंट्रोडक्शन की बात की, और ये बात बार बार तमाम पैनलिस्ट ने कही कि आप अपना मुख्तसर लेकिन जामे इंट्रोडक्शन कराइए, उसकी रिहर्सल करके जाएं. और अभी डॉक्टर शमसा ने बहुत अच्छा कहा कि आप एक सफ़े पे लिख लें. और मैं जब सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के लिए गया तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन 10 सफ़ों का लिखा, और फिर उसको मैंने कर्टेल किया, और फिर मैंने उसको पढ़ा, और फिर मैंने रिवीजन की, और करते करते वो कर्टेल इट टू हाफ अ पेज. आप तैयारी करके जाइए. इंट्रोडक्शन में जाहिर है आपने बेतहाशा बातें नहीं करनी, लेकिन जो बातें आप हाईलाइट करना चाहते हैं मेक श्योर कि वो बातें आप हाईलाइट कर पाएं, और ये तभी होगा जब आप उसकी रिहर्सल और प्रैक्टिस करेंगे. इसी तरीके से एंटिसिपेट कीजिए, ये बातें भी पहले हो चुकी हुई हैं लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन कह रहा हूँ. एंटिसिपेट कीजिए क्या सवाल हो सकते हैं, उन सवालों का मैं क्या जवाब दूंगा, उस जवाब से क्या सवाल आएगा उसका मेरे पास क्या जवाब होगा. ये टाइम गेम है, इसके अंदर आपके पास बहुत ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता. आपने फौरी रिस्पॉन्ड करना होता है, और फौरी रिस्पॉन्ड सिर्फ एक सूरत में आप कर सकते हैं, उस सूरत में जब आपने प्रैक्टिस और रिहर्सल की हो. इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग फुटबॉल मैच और हॉकी मैच और वट एवर. रिहर्सल और प्रैक्टिस इतनी क्यों करते हैं वो? इसलिए कि उस वक्त सोचने का टाइम नहीं होता कि मैंने अब ये गेम को इस तरीके से करना है. तो रिहर्सल और प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू डू. और यही ये वो बात है जो सब पैनलिस्ट कह रहे हैं कि आप अपनी प्रेपरेशन करके जाइए. बहुत अहम बात है कि आपको पता हो कि जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके लिए आप जा रहे हैं उसके तकाजे क्या हैं. वो आपको बिल्कुल यू नीड टू हैव अ क्लियर माइंड अबाउट दैट. एक बात जो है जो मैं जरूर जोर दे के कहना चाहता हूँ, जो प्रोफेसर शमसा ने भी कही है, कि आप जब इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आप क्यों अपीयर हो रहे हैं? आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए अपीयर हो रहे हैं. ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए. जब तक आप इस तरह नहीं सोचेंगे, आपका ये माइंडसेट नहीं होगा, भले आप गोल्ड मेडलिस्ट हों, भले आप डिस्टिंक्शन होल्डर हों, भले आपकी जो है ना एकेडमिक अचीवमेंट की लाइन लगी हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ऑफ अ विनर नहीं होगा तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा. दूसरी बात मेरा ख्याल है जो मैं बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ, इंटरव्यूअर
देखना चाहते हैं कि वो बेहतरीन कैंडिडेट को सेलेक्ट करें। तो बेहतरीन कैंडिडेट कौन सा होता है? वो जो बहुत हाई अचीवर रहा हुआ है, वो जो हाई अचीवर तो रहा हुआ है लेकिन उसके साथ मजीद भी अचीव करने की सलाहियत रखता है। वो जो शायद पहले तो हाई अचीवर नहीं रहा लेकिन उसके अंदर पैशन है, आगे बढ़ने का जज्बा है। तो ये जो पैशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, लेकिन while you are replying to the questions, make sure that your reply suggests the passion, your passion for the job, your passion for the well-being of the institute, your passion for the well-being of the of whatever department you would be going in. अक्सर ये बात की जाती है कि हम एक ऐसे एकेडमिक बंदे को चुने जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हों, और उसके ऊपर पूरा 1 घंटे का और बल्कि कई घंटों के सेशन हो सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज हों, उसी को चुना जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लीडरशिप क्वालिटीज के साथ इंटरव्यूअर हमेशा ये देखते हैं कि इस बंदे के अंदर टीम प्लेयर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये टीम की तरह काम भी कर सकता है और ये एक अच्छा फॉलोअर भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जो एक अच्छा फॉलोअर नहीं हो सकता वो एक अच्छा लीडर भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत अहम बात है, इसको भी जरूर ध्यान में रखिए। इंटरव्यू करने वाले सोचेंगे कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपने जहन में पहले ही तैयारी करके जाएं, जी अगर मैं आ जाऊंगा इस प्रोग्राम में एज असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर तो मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आप आपका इंस्टीट्यूट एक लेवल तक है, मैं इसको किस और लेवल पे ले जा सकता हूँ। आपके क्या आइडियाज हैं, क्या नोवल ख्यालात हैं, नोवल आइडियाज लेके जाइए। क्या आप इनोवेशन लेके जा सकते हैं। जरूर आपके बैग में ये भी चीज होनी चाहिए, जब पूछा जाए तो आप इनोवेशंस के बारे में जरूर जिक्र कीजिए। अब अक्सर ये होता है कि जब आते हैं तो अपने इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि जी आई हैव से 2 dozen publications ऑन माय क्रेडिट एंड आई हैव बीन अ कंट्रीब्यूटर टू अ टेक्स्ट बुक और व्हाटएवर। इम्कान है कि आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा आप बताइए कि आपकी जो फला पब्लिकेशन थी उसमें आपने क्या किया। तो जो शुरू में हमने बात की थी तैयारी करके जाने की, उसमें ये भी मद्देनजर रखिए कि आपने जो कुछ अचीव किया हुआ है, जो कुछ आप वहां बताना चाहते हैं, तो उसको भी आप जस्ट फॉरन एज अ नी जक रिस्पॉन्स आप इसके लिए तैयार हों कि अगर पूछा जाएगा कि आपकी 2015 की पब्लिकेशन में क्या फाइंडिंग्स थे तो आप खट करके उनको बता सकें। तो वो पता लगेगा कि इस बंदे ने वाकयातन ये एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो दिल लगा के की हुई है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि जी मैं फलां इदारे में था तो मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया या ये मैंने इनिशिएटिव लिया, उसके बारे में यू नीड टू बी वेरी वेल वर्स्ड। अगर आपसे पूछे तो आप उसको फौरन जवाब दीजिए, सोचो बचार ना कीजिए। अभी एक बात की थी डॉक्टर साहब ने, कम्युनिकेशन, इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप कि कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, अगर आप सोचो विचार ज्यादा कर रहे हैं, तो इट वुड नॉट गिव अ लॉट ऑफ गुड इंप्रेशन। मेरा ख्याल है कि बाकी तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, आई वुड नॉट वांट टू रिपीट ऑल दैट। दो आखिरी बातें मैं जरूर करना चाहता हूँ जो मेरी नजर में, एक तो मैंने बात की कि पैशन की, कि अगर आपको लगे कि जो बंदा आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें पैशन है, उसमें कुछ करने का जज्बा है, बेशक वो अगर हाई अचीवर नहीं भी है लेकिन उसमें जज्बा है, अगर उसको कुछ चीजें नहीं भी आती लेकिन उसमें पैशन है सीखने का, तो वो सीख जाएगा, वो चीज को आगे लेके चले जाएगा। दूसरी जो बात है मेरा ख्याल है जो बहुत अहम है, वो हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी है। Nobody would like to select a person who is proud to a level of insecurity. Your humbleness and humility ये बहुत जरूरी है, और ये फौरी तौर पे मौके पे इंटरव्यू के वक्त नहीं आएगी, ये हमें मुस्तकिल बुनियादों पे करने की जरूरत होगी। आखिरी बात मैं कहूँगा, मेरा ख्याल है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट अगर नेचुरल रहे तो वो कामयाब हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपीयर इंटरव्यू एज यू आर नेचुरली। अब उसके लिए क्या जरूरी है, अब तो आप कहेंगे, तो अभी तो आप कह रहे थे कि वो अच्छा लीडर भी होना चाहिए, अच्छा फॉलोअर भी होना चाहिए, टीम प्लेयर भी होना चाहिए, हम्बल भी होना चाहिए, ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए, उसको सारी चीजों का अदराक भी होना चाहिए, और आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो नेचुरल हो। तो देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग वी नीड
day in and day out to have all those things. And if we have all those things, then we would be appearing in interview naturally, and I'm sure that one would succeed in an interview. Thank you very much. मेरी तरफ से ये कुछ छोटी छोटी बातें थी. I hope would be of some benefit. Thank you. Thank you so much, sir. I will now be finally requesting Professor Dr. Arif Rasheed to take over. Professor Arif is the professor in the Department of Forensic Medicine at Reber Medical and Dental College. So please share your views and your important tips on how to succeed in interviews. Thank you, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. I have heard 4 or 5 talks, and I myself learned a lot. And I am confident that now, if I got an opportunity to appear for an interview, I will perform better than my previous interviews. Anyways, I was asked to speak on academic interview essentials, and I divide it into 3 parts: pre-interview, during interview, and post-interview. A pre-interview, all of the speakers that I have heard talked about the preparation. When you should start prepare to perform well in the interview, when you decide to apply for the post, the preparation include the job description and service rules of that post, that department, and that institute. That is extremely important, because most of the candidates do not know the job description and service rules, and that does not leave a good impression. Particularly at the first level, that is of grade 17, medical officers or women medical officers, when they appear for interview at Punjab Public Service Commission, they really don't know anything about the description of a medical officer or woman medical officer. So as you move at the higher post, it is most important to know, beside the academic research obligations, they must know the administrative duties and the public duties that they have to perform. And for that purpose, beside to have a strong grip on their subject, they some basic concepts about the PEPRA rules and leave rules, and they must know how to prepare the PC 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the disciplinary PIDA Act. These are the very important things if they are applying for a job in the public sector. Though the private sectors have their own structure, but some of the private institutes also run by the departments that falls within the domain of the public sector. For example, my institute, Rehbar Medical and Dental Institute, is a private institute, but it is administratively looked after by the Pakistan Rangers Punjab. So they have some different relief rules, some different disciplinary rules, and they have some different type of the drafting of the official correspondence. That must be in the knowledge of the candidate. Now, regarding that pre-interview preparation, the one thing that Professor Haroon just talked about, and Professor Shamsa, perhaps, as far as I remember, and that is the practice. Unfortunately, there is no culture of practice by the candidates appearing for the interview in our setup, factors regarding that can improve their speaking power, factors regarding how they have to enter in the interview room, how they have to sit on the chair, how they have to say no if they don't know the answer of any question. All these presentations
have the marks, and I am very confident to say that these presentation to walking into the interview room, to sit on the chair, how to answer, and how they have been dressed up, and whether they are composed or not, and their speaking part, that have the different marks, that are the parts of the aggregates of the total marks. Then at the higher post, they don't ask the subject related questions. Besides very brief questions, they ask, suppose you have received a fund of 10 crore rupees from the government. How will you spend it on your department? So that is something different from the academics and research. So I am not letting down the academics and research, but they need a person who can deliver on the administrative aspect and on the discharge of the public duties. There are two terms in the official setup or in say in a job. One is the efficiency and the other is a competency. So competency, a person who is eligible to appear for an interview, he is a competent because he has the required qualification. He has that is registered by the statutory council. He has the required research papers that has been published. But regarding the efficiency, it is not necessary that a competent person is efficient enough that he can perform in an adverse environment. As my specialty is forensic medicine, so we have to sometime deal with the mass disaster in case of alleged suicide bomber deaths that are hundreds more than the capacity of the medical legal system present in our setup. So here it's not the competency, it's the efficiency that matter, that how you deal with that scenario. If you stick with the book in that scenario, that and then you will be labeled as a not a reliable, efficient officer. That is my personal 36 years experience. I can just quote an example. In a bomb blast case, when the overnight police did not present the authority letter to conduct the postmortem examination, and I leave my duty at 4 a.m. And then reach at 8 a.m. again. So I received two telephone calls, one from the competent authority and one from the CEO of the hospital, that police is complaining that you are unable to perform the postmortem examination and CM has announced the time of namaz-e-janaza. So within an hour, when the radiological facility was not available, I realign my line of action and conducted the 4 postmortem on the 4 different autopsy table with the available staff without the X-ray examination, because these were the known cases of bomb blast. So and the police provided the paper after the namaz-e-fajr to conduct postmortem examination. Hence, here the efficiency counts. Second thing, the most important, neither panic nor be angry, just be polite, composed, but firm and confident in your answers. And that will come with the practice. And then after when you your interview finished, then you should say thank you, and you should, after interview, when you are going to collect your things, papers, files from the office of the superintendent, you must not pass any remarks or comments, because the feedback is given by that person in the interview room before the next candidate is called, and that has been very oftenly observed. The candidate usually, after answering
2 or 3 questions positively good, they then became euphoric. They start talking a lot. They start laughing. They enter into a state of euphoria. And the candidate who were unable to reply few questions, they enter into a state of some sort of depression. That to attain the pose of composure, you have to practice it, because they are observing your body language, and that also counts a lot. Uh, mm, uh, Preparation must be according to the status for which you have been joining. From a medical officer, they will never ask, KG, what are the PEPRA rules, and how will you improve your basic health unit. They ask questions from the status of the professor. KG, how will you improve the mortuary lab at the King Edward Medical University, Lahore? They will not ask the definition of autopsy. They will definitely ask what are the latest advances in in the autopsy, particularly keeping in view the pandemic of the corona. So you have to prepare according to that scenario. So these are my very brief presentation. I was given the 5 minutes. I hope I have finished within the time, because that allocation of time during the interview is also a matter where the things are being judged. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Very rightfully said, and thank you for your wise words. I thank everyone for attending today's session. Our sincere appreciation to our speakers for sharing their valuable insights so clearly and comprehensively. I hope all of the participants feel more prepared and confident for their upcoming interviews. We wish you all great success in your academic journeys. Thank you once again for your valuable time. Take care and have a wonderful day ahead. Allah Hafiz. With this, we'll be closing the session. Thank you so much, Professor Dr. Shamsa. Thank you so much, Professor Dr. Arif Rasheed. Thank you so much, Professor Dr. Faisal Ghani. Thank you, Professor Dr. Haroon Hamid. And thank you, Professor Saba Sohail. And thank you all of the participants who attended today's session. And I hope you all learned a lot. With this, I'll be closing the session. Thank you very much, and Allah Hafiz. Thank you. Khuda Hafiz. Allah Hafiz, Allah ma'am. Thank you Hafiz. so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.